नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ दीपक भारद्वाज। धर्मशाला में इस समय हम जोगीवाड़ा में मौजूद हैं और आज की खबर जो है, क्योंकि हम बात करें मैक्लोडगंज की खबर जो है हमारी आज मैक्लोडगंज में ओवर कंस्ट्रक्शन की है, जो लगातार जो है हिमाचल प्रदेश में, या हम पहाड़ी राज्यों की बात करें, चाहे उसमें उत्तराखंड है और जो दूसरे राज्य हैं पहाड़ी राज्यों में, लगातार पिछले हम बात करें पिछले कई वर्षों से बादल फटने और लैंडस्लाइड जैसी जो ये मामले हैं ये हम लगातार देख रहे हैं। और इसी के चलते जो है, क्योंकि इनके पीछे क्या कारण है, किस वजह से जो है लगातार पहाड़ी राज्यों में इस तरह के मामले बार बार सामने आ रहे हैं, चाहे बादल फटने की बात हो, चाहे बाढ़ की बात हो, चाहे लैंडस्लाइड की बात हो। क्योंकि जोशीमठ जैसा मामला भी हमने देखा है, हम उसके साक्षी रहे हैं। और अब जो है, क्योंकि हम बात करें मैक्लोडगंज में भी ओवर जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रही है, और उसी के चलते जो है आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़े हैं जिनसे हम जानेंगे कि क्या इन सब चीज़ों के पीछे क्या कारण है। और क्योंकि हम बात करें तो यूएसए में ये जियोलॉजिस्ट रह चुके हैं, क्योंकि भूगर्भ शास्त्री जिन्हें बोलते हैं, भूवैज्ञानिक जिन्हें बोलते हैं, तो उन्हें जो है इन सब चीज़ों का उनका एक काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस जो है यूएसए में इस विषय पर है। और उनसे हम जानेंगे कि अगर हम बात करें धर्मशाला, मैक्लोडगंज, उत्तराखंड की बात करें, तो लगातार जो ये सिलसिला वहाँ पर चल रहा है, चाहे लैंडस्लाइड की हम बात कर रहे हैं, जो ओवर कंस्ट्रक्शन हो रही है, बादल फटने की, तो किन सब चीज़ों के पीछे क्या मुख्य कारण, तो आज हम उनसे मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या मुख्य कारण इनके पीछे रहे। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज योर नेम? Cynthia Travis. I'm from the USA. Okay, and would you please tell us what is your profession? I was a professional geologist in Arizona, USA. How long you be? I've been here in McLeod Ganj for 13 years. Okay. So in 13 years, we both are witnessed about the cloud bursts happening in last few years, and landsliding, and cloud burst and flood. So what do you think? What is the main reason for this? All this? A lot has changed in McLeod since I got here. There's a lot more construction, so there's a lot more weight on the hills. So that is one problem. There has always been a drainage problem here. The water leaking from the drinking water pipes. Sometimes they're on, sometimes they're off. They're leaking. And these leaks have undermined the road. So in lots of places, the road is starting to fall down. And then recently, since COVID, there's been so much more traffic here. And so when you get the pounding on the road and add it with the leakage, it starts to wear away at the road. There's no foundation underneath the road to keep it in place. And this is why it's falling. And it's very worrisome because we have a landslide up there that I think is going to close Jogiwara very soon. And as you look at the hills, they're really, really steep. And you shouldn't really put too much weight on hills this steep. So that's... You mean to say the government should limitation on the construction of the building? There should be some limits on the construction, and there really should be some work done on the water drainage, the leakage. There's constant leakage. And then, the sewer system here was designed for a lot less people. It has exploded in tourism, exploded in number of hotels. But every weekend when there's a lot of tourists here, the sewers overflow, and that causes drainage problems and health problems because that's sewage, and that can cause a lot of sickness, airborne sickness, waterborne sickness. So really, if they fix the leakage, that would go a long way along with the drainage. That would be a good start. And then monitor your construction. That would be my recommendation, but I don't know how it goes here. How do you think the roads are just we are just constructing road in hills? How do you see it's good or? I think that it's going to be a problem because, like, even where they're putting this bridge in, they cut the toe of the hill. So when you cut the toe of the hill, the rest of the hill is not stable anymore. So when you have it this at an angle and then you cut it at the bottom, it's going to fall. So I don't know if they're having a geologist look and see, well, yes, we can take this part of the hill down or not. I don't know what they're doing, but they have cut across places that I would not cut across. How do you see, because the sewage, there's a very big issue in McLeodganj and Jogiwada Road, Dharamshala. Sewage, every one day after or 2 days after, we are witness of sewage leaking.
How do you see this problem? Well, how you do it is you put in a proper sewer system and then you separate the drinking water pipes, which are these small pipes that are stuck down in the drain that mix with the sewer and the storm water, and they mingle. And then everybody has health problems during this time of year because you can't stop the mingling of this water. You separate the water, drinking water in one pipe, and you separate the sewer system in another pipe. And it would be better really to start with the sewer system because then it would protect the drinking water. How do you see that now in McLeodganj there are so many construction and there are no much gap in both buildings. In buildings there are no much gap. They are just touching each other. How do you think? Yeah, they're pretty close. I just saw a talk down at the library, and again, there's other experts on the buildings. I'm more an expert on the water and drainage. It's okay in some areas because they actually help keep each other up. But again, it's too much weight on the hills. It depends on where it is. And I don't know how they get permits or how they decide how things are built or anything. But they're also going really high. And so I just don't know what the regulations are. So I say follow the regulations, whatever they are. It may risk out to earthquake. The risk is a very high risk zone for earthquakes. So, really taking a look at and seeing is what buildings are built for earthquake protection against earthquakes. There's not many. And I know that there's groups just starting to take a look at that. And I think it's real important because they'll start at the hospitals, the schools, in areas that have lots of people. And what we need, if there is an earthquake here, everyone will need a hospital. So those places need to be fortified. What do you suggest to at this time? What can government or administration can improve this situation? Oh, I don't know where I don't know where you start, but I really would recommend to put in new pipes for the water system because they leak. They leak everywhere. They leak year round, and so that problem is year round. Now you can't really tell because it's raining so much. You can't really see how much leaking. So I would say fix the water pipes and the sewer system. And in the drainage, you could do those three at the same time. And how you handle construction, you have to decide on that. Okay, thank you so Thank much. तो ये थे हमारे साथ यूएसए के भू वैज्ञानिक जिन्हें हम कह सकते हैं भूगर्भ शास्त्री हमारे साथ है और उन्होंने यहाँ की उन्हें रहते हुए 13 साल उन्हें यहाँ पर हो गए हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ी समस्या जो है यहाँ की दिखी और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि यहाँ पर पहाड़ियों की जो कटाई जिस तरीके से हो रही, चाहे हम सड़कों की बात करें क्योंकि हम बात कर रहे हैं जो इंद्रनाग से जो मैक्लोडगंज भागसूनाग के लिए जो रोड निकल रहा है उसके लिए इन्होंने खुद साफ तौर पर कहा है कि उसकी जो कटिंग है वो बिल्कुल गलत तरीके से हो रही है क्योंकि जो पहाड़ी है बिल्कुल खड़ी पहाड़ी है और जिस हिसाब से उसे काटा जा रहा है तो भविष्य में कभी भी वहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकता है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि लगातार जो यहाँ पर मैक्लोडगंज में जो ओवर कंस्ट्रक्शन हो रही है और कंस्ट्रक्शन के नाम पर भी उन्होंने कहा है कि कंस्ट्रक्शन अगर हो रही है तो वो कहीं ना कहीं 2 से 3 मंजिल तक होनी चाहिए, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन जो है कम से कम 5 से 6 से 7 मंजिल तक कंस्ट्रक्शन हो रही है जो एक बहुत बड़ी समस्या है। तीसरी समस्या जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा बताई है कि ड्रेनेज, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या इन्होंने सही कहा है क्योंकि अगर हम धर्मशाला के किसी भी हम पहाड़ी राज्यों की बात करें तो वहाँ पर ड्रेनेज जो सिस्टम है वो बिल्कुल बेकार हो चुका है या बिल्कुल ख़राब हो चुका है, टूट चुका है। जो नालियाँ हैं हमारी वो ब्लॉक हो चुकी हैं, जो सीवरेज प्रॉब्लम, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छोटी छोटी पाइपें जो है वह डाली हुई है और कहीं ना कहीं पीने के पानी की लीकेज कहीं ना कहीं से हो रही है। जो सीवरेज की जो लाइनें यहाँ डाली गई है, छोटी छोटी पाइपें जो डाली गई उस वजह से जो बार बार वो ब्लॉकेज होती है और उसका पानी जो है निकलता है। और साथ ही जो बरसात के मौसम में जो उन्होंने कहा है कि बरसात के मौसम में जो पानी, क्योंकि इतना बारिश यहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा, अगर हम बात करें तो पूरे भारत में जो दूसरा राज्य हिमाचल प्रदेश आता है जहाँ पर धर्मशाला आता है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है बारिश होती है। तो ऐसी स्थिति में जो है ड्रेनेज सिस्टम जो है यहाँ के लिए बहुत ही, जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। पानी की निकासी, चाहे बारिश का कहीं का भी पानी हो, उसे एक
बढ़िया जो कंक्रीट की नाली बनाकर और उसमें जो पानी की पाइपें हैं, पीने की पानी की पाइपें, उन्हें जो है अलग से ले जाया जाना चाहिए। सीवरेज की जो पाइपें हैं उन्हें बड़ा करना चाहिए। अभी भी इन्होंने कहा है कि अभी भी समय है कि अगर हम जो सीवरेज की जो छोटी-छोटी पाइपें हैं उन्हें हम चेंज करके उन्हें हम बड़ा करते हैं, उनके आकार को बड़ा करते हैं, ताकि जो पानी का, क्योंकि काफ़ी पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है और वो जो अगर सिस्टम उससे ठीक होता है, ड्रेनेज का सबसे मुख्य मुद्दा इन्होंने माना है। अगर ड्रेनेज अगर इन पहाड़ी राज्यों की अगर ये सही हो जाती है और दूसरा अगर कंस्ट्रक्शन पर कहीं ना कहीं रोक लगती है, तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश और इस तरह के जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पर जो ये समस्या जो हम बात करें 1 दशक से हम लगातार देख रहे हैं, लैंडस्लाइड की, क्लाउड बस्ट की, फ्लड की, तो वो समस्या कहीं ना कहीं तक हल से हो सकती है। तो ये इस पूरी बातचीत पे आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, और कहीं ना कहीं अगर ये हमारी जो सरकार है, हमारे जो प्रशासन है, हमारे जो अधिकारी हैं, अगर ये कहीं न कहीं उनका ये एक फेलियर है कि इस तरह की कंस्ट्रक्शन उनके द्वारा करवाई गई है, उस तरह की नालियाँ इनके द्वारा बनाई गई है, जहाँ छोटी-छोटी नालियाँ डाली गई है, तो कहीं न कहीं एक फेलियर जो है सिस्टम का यहाँ पर रहा है। इस पूरे जो समस्या जो ये लगातार हिमाचल प्रदेश और पहाड़ी राज्य में आ रही, तो ये फेलियर जो कहीं न कहीं हम वो कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का रहा है। तो इसे जो है ठीक किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में जो है, और एक जो है हमारा भी निवेदन रहता है कि आने वाले समय में जो है कंस्ट्रक्शन कहीं न कहीं अब जो है रोक देनी चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है आज एक टिप्पणी दी है कि अगर हिमाचल प्रदेश में जो ये मामले जो लगातार है इन पर रोक नहीं लगाई गई, तो हिमाचल नहीं रहेगा। और यही बात जो है हम भी अपने चैनल के माध्यम से काफ़ी समय से कह रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रही है और जिस तरह से बार बार जो है इस तरह के मामले जो है सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा देनी चाहिए। तो बातचीत कैसी लगी है, आपकी क्या राय है, ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और फिलहाल इस खबर के साथ मुझे यानी कि दीपक भारद्वाज को दें इजाज़त। नमस्कार।